Today I want to give you a challenge. Are you ready for it? आज आपको मैं एक चुनौती देने वाला। तैयार हो ना आप लेने के लिए? पता है चुनौती क्या है? आपको का बोलना है आ के बगैर। आप कर सकते हो क्या? You have to say the word ka without a in it. Can you say? Try. The moment you open your mouth, any sound comes, the first sound that comes out of you is ah. You cannot say without a, you cannot say ka, right? Okay, ka, let's go. Let us say cha. Can you say cha without a? अच्छा चलिए का छोड़ दो, अब चा बोल सकते हो क्या आ के बगैर? बोलने की चेष्टा करिए। कुछ गले में अटकता है, something stops you in the throat. Without a, the sound does not complete, right? The sound cannot come. You cannot pronounce that sound. So this trying to do something which is impossible suddenly creates some space in our head. It stops the thought process. जब हम कुछ असंभव के ओर चलते हैं, असंभव को करने की चेष्टा करते हैं, तो मन शांत हो जाता है, वहां विचार थम जाते हैं, रुक जाते हैं, है ना? आप इस पर गौर करिए। आप देखिए, आप बैठे बैठे उठने की चेष्टा करो, पद्मासन में बैठे बैठे उड़ने की चेष्टा करिए, चेष्टा ही रहता है कि उस वक्त विचार थम जाता है। पूरी ऊर्जा, शरीर की पूरी ऊर्जा एकत्रित होने लगती है उस वक्त। When you try to do something, just try to lift yourself up, sitting wherever you are. This very process of trying, what happens, all our energy gets consolidated and moves upward. At this time, the mind just becomes standstill. Thoughts just freeze. And in between, it allows you to sink deep in meditation. It's our mind which takes us for a ride all the time. Either it pulls us to the past or to the future, right? You are sitting and mind is pulling you towards the past. All those memories are coming, or planning is going on about what you should do in the future. But the moment you think about something that is impossible, or try doing something very difficult, the thoughts subside, your energy gets consolidated, and then you are able to experience a dimension which was hiding behind our mind, behind all those thoughts, all those emotions, all those concepts. The meditation is that which takes that leap, takes you beyond the concepts, beyond our experiences of past or expectations of the future. So we are going to do this different type of meditation today. Those of you who are joining me for the very first time, you might find it, this is little advanced one, but nevertheless, you'll also get something, okay? For you, I would say, those of you who are doing this for the first time, I would say you do the Panchakosha meditation before. You do the other forms of meditation which I have already been conducting. Then this will make even more sense, yeah? Right now, whatever you get it, that's good enough. Just take it, yeah? तो जैसे जैसे हम
असंभव को संभव करने की चेष्टा में लगते हैं तब मन थम जाता है, विचारें बंद हो जाती हैं। तब सिद्धांतों के परे, विचारों के परे जो शुद्ध चैतन्य तत्व हमारे भीतर है, उसके साथ हमारी मुलाकात होती है, या हमें अपने आप से मुलाकात होने लगती है। हम इन सब विचारों से आलादा हैं, हम सब भावनाओं के परे हैं। हम भूत और भविष्य काल के जो भी चिंता या हमारे अनुभव है, ये सब अनुभूति से भी हम परे हैं। हमारे भीतर ऐसी खजाना है, शुद्ध चैतन्य की खजाना, वो हमें प्राप्त होता है ध्यान से, सिर्फ ध्यान से होता है। अभ्यास करते जाइए। ध्यान के अभ्यास में पहले तो मन की शांति, शांति तो बहुत छोटी सी चीज़ है। फिर प्रसन्नता, वो भी मैं इतनी बड़ी बात नहीं समझता हूँ। ऐसे परत दर परत, कदम दर कदम हम चलने लगते हैं अपने ओर। हम पाते हैं जो एक महत्वपूर्ण शक्ति जिसकी तलाश है, वो यहीं है, अपने पास है, अपने में है। तो जीवन में पूर्ण तृप्ति, माने पूर्ण तृप्ति का अनुभव मिलेगा, और हम जो चाहते हैं, सोचते हैं, वो काम बहुत हद तक, ये नहीं कहूँगा सभी काम हो जाएगा, बहुत हद तक जो हम चाहते हैं, सोचते, सब काम होने लगेगा, अनायास होने लगेगा। हाँ? चलिए अभी बैठते हैं। लेट अस सिट कंफर्टेबली, इजीली, आराम से बैठ जाते हैं। एंड वी कीप अवर sight, our gaze fixed at 30 degrees. 30 degrees is in front of you, about 1 feet in front of you, about 1 foot in front of you, 1.5 feet in front of you. You fix your gaze there. अब हम शरीर को ढीला छोड़ देते हैं और अपना आंखें खुले रखते हैं, बंद नहीं करेंगे। सामने 1 फुट दूरी तक की जो जगह है, वहाँ एक जगह हम अपनी दृष्टि को टिका के रखते हैं। आप स्क्रीन में मत देखिए, हमको मत देखिए, किसी और चीज़ को मत देखो। अपनी दृष्टि सामने 1 फुट दूरी पर या 1.5 फुट दूरी पर टिका के रखिए। अब शरीर को थोड़ा सा एडजस्ट करना हो, हिल के या कुछ आगे पीछे करके कंधों को हिलाना हो, पाँव को थोड़ा आगे पीछे करना हो, करके आराम से बैठ जाइए। जिस आसन से बैठने से आपको पूरा आराम मिलता है, ऐसे बैठना चाहिए। पलटी मार के ही बैठना ऐसी ज़रूरी नहीं है। यू सिट कंफर्टेबली एंड ईजिली इन विच एवर पोज यू फील कंफर्टेबल. Adjust your back, your legs, any twitches here and there. This is the time to adjust them all. अब पूरा शरीर को एडजस्ट कर लीजिए। दृष्टि टिकी हुई है। सांस चल रही है लगातार। सांस पर अपना दृष्टि दे। एक लयबद्ध ढंग से सांस इस पर चल रही है, उस पर ध्यान दीजिए। दृष्टि टिकी है, हमारा ध्यान सांस पर है जो लयबद्ध ढंग से चल रहा है, और शरीर स्थिर है इस वक्त। This moment your gaze is fixed, your body is still, your breath is moving in rhythm. Observe the rhythmic breath. Pay attention to the rhythmic breath that's happening now.
आपके चारों ओर आसपास एक प्रभा मंडल बना हुआ है, उसके प्रति भी सजग हो जाएं। There is an aura of energy all around you. Just become aware of that also. Just become aware of space all around you. You are emitting energy in all directions. हमारे शरीर से तरंगे चारों ओर जा रही हैं। अब आप आंखें बंद कर सकते हो। Now you may close your eyes, and now we will chant the sound Om, which means peace and love. अब हम ओंकार का ध्वनि करते हैं 3 बार। ओंकार का ध्वनि से प्रसन्नता, शांति और प्रेम के तरंग निकलते हैं चारों ओर। गहरी सांस लीजिए। Take a deep breath in. फिर एक बार, once again. With a big smile, take a deep breath in. Keep your eyes closed. आंखें बंद रखें। Become aware of the central axis in your body. शरीर के मध्य भाग पर अभी अपना ध्यान देंगे। शरीर के बीचों बीच एक नाड़ी है, ऐसा समझिए। शरीर के बीचों बीच अपना ध्यान टिका के रखें। Keep your attention on the central line of your body, the central nerve, from the base of the spine to the top of the head. A gentle attention on the central nerve. Your body is still, your breath is feeble, and your mind is right in the center. इस वक्त शरीर स्थिर है, सांस धीमी है और लयबद्ध तरीके से चल रही है, और आपका मन बीचों बीच है।
अब मन ही मन का बोलने की चेष्टा करें आके बगैर. Now, in the mind, try to say the word ka without a. You will notice the energy is getting stuck above the palate somewhere in the head. Just be, let it be. कहा बोलने की चेष्टा करें आंखें बिगाड़. आप पाओगे आपकी ऊर्जा कहीं तालों से ऊपर, कहीं मस्तिष्क में अटक रहा है, कहीं कुछ अटक रहा है, ऐसा लगता सकता है. कहीं कुछ अटक रहा है ऐसा लग सकता है. फिर एक बार चेष्टा करें का बोलने की आके बगैर. मन में भी आ नहीं बोलना है, आके बगैर का बोलना है. Even in the mind we don't want to say ka with a, we want to say ka without a. This very effort, you may see there is something stopping in the mind, in the brain. And notice the space that is getting created right away. Mind is becoming empty. Thoughts are fewer. गौर करे, मन थम सा जा रहा है, विचार थम गया है. इस वक्त सिर्फ शरीर और कहीं कोई तनाव का अनुभव हो सकता है. उसको रहने दें. This moment you may experience some stiffness or some tension. Let it be. Embrace any stiffness or tension or pain anywhere in the body. Just give it a hug from by your mind and let it be. कहीं पर भी कोई भी असुविधा हो, या असुखद संवेदना हो, उसको स्वीकार कर लें, उसको आलिंगन कर लें, दर्द को गले लगा लें. और बने रहें. फिर एक बार का बोलने की चेष्टा करेंगे मन ही मन आके बिगाड़. Once again we make an effort to say ka without a, which is impossible. Now let go. Let go of all your effort.
Now let us take our attention to our pit of the stomach, near our solar plexus, deep inside, and identify a tiny point right there. अब हम अपना ध्यान को नाभि के ऊपर एक बहुत छोटी सी बिंदु, नाभि के भीतर और ऊपर एक छोटी सी बिंदु पर ले जाते हैं। एक तिल के बराबर छोटी सी बिंदु पर, राई के बराबर एक छोटी सी बिंदु पर अपना ध्यान ले जाते हैं, नाभि से जरा ऊपर सूर्य ग्रंथि के पास। अपने पेट के बीचों बीच, in the center of your stomach, deep inside, take your attention to a tiny dot. As though all your energy of your body is focused in this tiny little dot. Just be. जैसे शरीर की सारी ऊर्जा एक जगह इकट्ठी हो गई हो, इस तरह से उस बिंदु को पहचाने और छोड़ दें। Then let go and relax now. Let your mind expand in all directions. मन को चारों ओर फैलने दीजिए। फिर मन को चारों ओर सिमट करके वो छोटी सी बिंदु पर ले आ रहे हैं। इसका एक ख्याल ही काफी है, विचार ही काफी है, और छोड़ दें। अब सब प्रयत्न छोड़ दें। Bring your mind, gather your mind from all sides and bring it to this tiny dot just above the navel near the solar plexus. And let go and relax. Now let go of all your efforts. Let the mind expand and become aware of the space in this entire room you are in. अपने चारों ओर जो खाली जगह है उसका स्मरण करें। अब सारा प्रयत्न छोड़कर विश्राम करें। Now let go of all your efforts. सब प्रयत्न छोड़ दे। Let go of all your efforts and just be. सिर्फ बनी रहे, बनी रहे।
सर्वेषां शान्तिरस्तु, सर्वेषां तुष्टिरस्तु, सर्वेषां पुष्टिरस्तु, सर्वेषां मङ्गलं भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। And slowly and gradually become aware of your body and surroundings. धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाए। And just crack open your eyes. Allow a ray of light to enter inside of you. Just be here now. आंखें जरा सा खोले ताकि एक रोशनी की किरण आपके आंखों के अंदर जा पाए। सिर्फ 2% आंखें खोलें, ज़्यादा नहीं। अब आपकी चेतना ना भीतर ना बाहर, मध्य में है। Now your attention is neither totally inside nor outside. It's in the middle. Let it be. Become aware of your forehead, where the single ray of light is moving through your eyes to the forehead and right to the brain. आँखों की दरिया एक किरण रोशनी की अंदर जा रही है। माथे पर ध्यान दीजिए, फिर मस्तिष्क पर ध्यान दीजिए। देखिए मन एकाग्र हो रहा है इस वक्त। Notice there is focus in the mind this point. A tiny ray of light and a tiny breath that is moving up and down in the nostril. A gentle attention inside the forehead. All can create a lot of awareness. मस्तिष्क के भीतर, माथे के पीछे हल्का सा ध्यान, सांस की गति पर ध्यान, जो नासिका के भीतर बाहर हो रहा है। नासिका के भीतर बाहर हो रही है जो सांस, उसका ध्यान। फिर एक हल्की सी रोशनी जो आंखें अंदर से आपके भ्रू मध्य में जा रही है, उस पर ध्यान। एक और गहरी सांस, आंखें थोड़ा और खोलें और खोलें।
अब 30 डिग्री तक खोलिए, मन फिर भी अंतर्मुख बना रहे। Your eyes are open now 30 degrees, but your mind is still inward. Up now, blink your eyes, पलकों को मारते हुए फिर पूरी तरह से आप आंखें खोल सकते हो। Now you may open your eyes fully. अब आपको लगता है और थोड़ी देर ऐसे ध्यान करें, आप कर सकते हो, 10-15 मिनट बैठ के कर सकते हो। और मैं 2-4 प्रश्न का उत्तर भी अभी दूंगा, तो अभी हम लोग 5-7 मिनट प्रश्नोत्तर पे चलते हैं। Let me take some of your questions that have come online. Meanwhile, if you can feel like continuing in this subtle state for a couple of more minutes, you can do so. You can close your eyes, either lie down or sit and just be. Yeah. Now I would like to take a few questions from the. Gurudev, we have questions in both English and Hindi, and we'll take them turn by turn. Yeah. अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रश्न हैं, हम एक एक करके लेते हैं। गुरुदेव, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस कठिन समय में आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि जब जीवन में चुनौती आती है या पीड़ा आती है तो हमारे गुण उभर के आते हैं और हम भीतर से मजबूत हो जाते हैं। क्या इसका अर्थ ये है कि हम दूसरों की ग्रोथ के लिए उन्हें पीड़ा दे सकते हैं? संस्कृत में कहावत है, कष्टस्य सुखस्य न कोपि दाता। आप किसी को पीड़ा देना या खुशी देने की बात भूल ही जाओ। हाँ, आप अपना कर्तव्य करो। किसी को पीड़ा दे के उनको ठीक करना, ऐसा सोच के किसी को पीड़ा देने से नहीं होता, पर किसी को सिखाना है अच्छे से, वो सीखे जीवन में। इस भाव से चलोगे तो बीच में सीखने की प्रक्रिया में पीड़ा होती है, तो उसको सहन करने के लिए उनको बोलना पड़ेगा। सिर्फ पीड़ा से ही कोई सीख जाता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। Gurudev, it was recently in the news that right after China lifted the lockdown, the number of couples getting married increased 300 times, that a popular matrimony website crashed. At the same time, divorces have doubled. It seems during this lockdown, either people are falling in love or they're falling out of love. How do we stay in love? Yes. Well, if this is the experience of China, it is worth noticing it. It's understandable when people are locked in, they get to know each other's qualities too much. And so the dislikes, when they stand out, they start divorcing. On the other hand, when they are together for so long and they have been talking, communicating with each other in a lockdown situation, they start liking each other too. They find good qualities in each other. So it's good they found good qualities and they want to live together. It's just a matter of taking time to yourself, making your intellect sharp so you can know yourself and you can gauge others. But one thing I want to tell you, if you are getting into a relationship wanting something more than giving in the relationship, it's not going to last too long. But in a relationship, you come from an attitude of giving, of contributing, of sharing. It will last much longer. That's what I have seen. I have no experience at all in this field. Yeah. गुरुदेव, जब भी आपको स्क्रीन पर देखती हूँ आंखों में आंसू आने लगते हैं।
मैं सेवा करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें खाने की भोजन की आवश्यकता है, पर हम बाहर नहीं जा सकते। उन लोगों तक कैसे कैसे पहुँचें जिन्हें हमारी ज़रूरत है? देखिए, आप बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घर में बने रहिए। अपनी संस्था इसीलिए काम कर रही है, ये सब जगह प्रोक्योर कर रही है, लोगों से, किसानों के पास जाके उनसे सामान ले रही है और जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा रही है। और जो मज़दूर है जिनके पास कुछ साधन सामग्री नहीं है, उन तक पहुँचाने की पूरी व्यवस्था बनी हुई है, वो पहुँच रही है। इसलिए आप संस्था की जो IAHV का वो जो है उससे संपर्क करो, फ़ोन में संपर्क करो, फिर आप उसमें अपना दान दे सकते, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। Gurudev, what is your message to companies and business owners who have to cut costs during these difficult times but are also expected to be compassionate towards their employees? In this, I would say the employees should also be part of it. They should come forward. If everyone comes forward and donates part of their salary or take a pay cut, it would be easy for the employer also, because employer is also struggling to keep afloat a company. For him to survive, he also needs the total cooperation of employees. So this is a warlike situation where everyone has to come forward. Employees should take a pay cut. Employer should see how best he can retain people without sending them. And if he has to send 10 people so that he can feed at least the other 40 people, he will have to do that. गुरुदेव, इस पथ पर ध्यान से अगला चरण क्या है और आत्मज्ञान प्राप्त करने का क्या मार्ग है? इस पथ पर ध्यान ही मार्ग है और ज्ञान ही इसका सार है। ज्ञान, ध्यान और इन दोनों के साथ गान। आप बैठे थोड़ा भजन करो, कीर्तन करो, गाना गाओ, हाँ, साथ में ध्यान और ज्ञान पर अपना मन लगाओ, रुचि लेना। हमने बहुत सारी बातें कही है, भक्ति सूत्र भक्ति पर, अष्टावक्र गीता पर बोला है हमने। ये सब ज्ञान सुनिए, गीता का ज्ञान सुनो, मगर इन सब का सार है ध्यान। ध्यान करते जाओ, देखो इसमें अवश्य ही आप अपनी लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। मौन शिविर भी बहुत हमको मदद करेगा। अपना ये आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस वर्कशॉप के बाद एक मौन शिविर करते ना, 5 दिन का, 4 दिन का, वो मौन शिविर करिए। आपको घर बैठे बैठे, अभी ऑनलाइन भी शुरू कर दिया, उसमें आपको पूरा अंदर से वो प्रकाश और आप खिल जाओगे अंदर। Gurudev, I come from a tradition of meditation that centers around focusing on the breath. I'm having a hard time breaking away from this during your meditations. Please help. Whatever is hard, you don't do it. And I tell you what, it's easy to let go of any doing. So you are focusing. I tell you, don't do anything. Can you just let go of focusing? You can. Yeah? See, when you chant Om, after chanting Om, you are simply there. The breath has almost become feeble. Your mind is just in the vibrations, right? So, like that, when the mind starts expanding in deep meditation, there is no focus on anything. Focus is concentration, it is doing something, it's an effort for mind to stay someplace. We want to become
we want to get to a state of no mind. So you have to drop all that. If you are used to doing japa, if you are used to doing focusing on the breath, you are used to focusing your attention somewhere, all this is dharanas only. Means one step before meditation, dhyana. If you have to go to meditation, you have to take a quantum leap, a jump, and that is where you do nothing. You have to just drop everything. गुरुदेव, I mean, for that period of time. I don't say you should drop doing your japa. No, you do it later on. In meditation, you don't do japa. After and before meditation, you can do your japa. Then you can focus on your breath. You can do all that. That is all when you want to come out of meditation. That's good. गुरुदेव, अपने भीतर जाने के लिए अकेले रहना बेहतर है या दोस्तों के साथ? हालांकि हमारे बीच में आपस में प्यार है, पर अनचाहे बहस और झगड़ों के कारण मन अशांत रहता है, तो इकट्ठे रहें या अकेले? देखिए, आप इकट्ठे बैठो, अकेले बैठो, फर्क नहीं पड़ता. जब आप आंखें बंद कर लेते हो, फिर तुम वहाँ अकेले होते हो. सिर्फ हमारी आवाज़ होगी और आप होंगे. आप आवाज़ सुनते 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 आप शांत हो जाओगे. ध्यान का यही कला है. हाँ, बाजू में कोई भी बैठे रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है ना? Gurudev, many families are struggling with managing bereavement and grief, having lost loved ones, and not being able to gain closure through funerals or be in physical contact with others, which would ordinarily provide some solace. What advice can you give those who are having to manage or postpone their grieving process in current times? Yes, we must know that the soul or spirit is not bound by place. Once someone dies, that spirit is everywhere now. So wherever you are, you pray for them, you express your gratitude to them, you express your whatever feelings you want to, express to them, you can do it. Wherever you are. In fact, when you meditate, it's the best way to see someone off. It's the best way to give someone solace and also express your condolence or gratitude. Okay, you don't have to go where the body is. That's only body which is lying there. The spirit is gone. Spirit is everywhere. So know this fact. Are you wanting to connect to the spirit or to the body? If you want to express your feelings, your respect to the spirit, you can do it wherever you are. Right? You don't have to go near the body to express your gratitude or your, whatever feelings you want to, gratefulness to that particular soul. If you want to pray for the peace of any soul, you can do wherever you are. Okay, yes. You could not participate in certain ceremony, funeral ceremonies. It's a pinch, but what do we do? This is the time. And in this time, if they have gone, this is what the universal mind has designed. So accept the verdict of the universal mind. Accept the verdict of divine, which has made such plan for you not to be in the funeral and for you to be wherever you are. You have to be. See, neither the birth nor death are in your hands. Let us make this point very clear to us. So it is all happening from some big design. So when that has happened, let us take it in good spirit and be where we are, pray where we are, and the departed soul will also understand
Okay? Gurudev, throughout history, we've seen that those who are motivated by greed and those who love war have always been able to organize more effectively than those who love peace. How do we turn this around? Art of Living has already done this. Art of Living in 156 countries have shown to the world it is possible to get together. We all can work in peace and for peace, you know. But when we pay attention to inner peace, if we don't have inner peace and we are only talking about peace and trying to get peace from other things around us, no way. When you find inner peace, you can organize everything so much better. So much better. Yeah? Because knowledge has organizing power. Wisdom has organizing power. Because wisdom gives enormous patience and gives insight and great depth in understanding. When you have great understanding, in-depth understanding, when you have patience, nothing is impossible.